boys and girls, it is time for the final defeats and the final victories, ladies and gentlemen. The winner is going to take it all. And ladies and gentlemen, the kings of the jungle, the lions, are about to roar in this ring and to compete with each other for the top spot in this jungle called the ring, ladies and gentlemen. And now, here's introducing our first wild maniac. The violence, ladies and gentlemen, is about to begin. From him, representing Kargil Ladakh, to destroy his opponent from Team Pavan. Please welcome MEHDI Notorious Nasire. To give him the damning fight of his life, ladies and gentlemen, welcome to the ring, a real technician, ladies and gentlemen, who fights with guts and glory all the way from Nagaland, from Team Bharat. Please make some noise for NEISTO Angami Checkmate! First up, ladies and gentlemen, please make some noise and show some love to the two warriors who are here in this ring, ladies and gentlemen. The Notorious and the Checkmate, NEISTO and MEHDI are right here, ladies and gentlemen. On my right is Angami from Nagaland, ladies and gentlemen. He puts Nagaland on the map. And thank God for that. Thank you very much. Ladies and gentlemen, he's given it his all. And if there's one thing that you know that this man has kept his nerves till the end. What a technician. What a magician. And the fact that you can be cool and calm and collected in the face of danger. Ladies and gentlemen, that is the man right here to my right. NEISTO Checkmate Angami. And ladies and gentlemen, the man all the way from Ladakh, both these boys, ladies and gentlemen, a man who has fought against all odds to be here to prove that he belongs in this ring, ladies and gentlemen. He's blown and he's, of course, kicked and punched. And he is here to survive. Ladies and gentlemen, this is MEHDI Notorious Nasire. Both these boys, ladies and gentlemen, have so much in common. Both belong to the mountains, the glorious mountains. Oh, the conditioning, oh, the environment which goes into building these two champions, building these two warriors, ladies and gentlemen. They're friends, they're roommates, they're sparring partners, ladies and gentlemen. This is something else, and there, I believe, is where the important decision lies. Over to you, Anna. Boy, that's a tough decision. As much as we all want to see these two fighters fight. I mean, I've rooted for them throughout the tournament. Boys who've come from the mountains, boys who've come from humble backgrounds,
boys who've trained by themselves without probably the best training facilities that a lot of the other kids in the city have a possibility to, but yet have come up to this stage, fighting some of the best fights that we've seen in the league. Fighting some of the best fighters in the league. All the boys, all the fighters out there you see are excellent. Each one of them has something that separates the men from the boys. Now, these are men who are great fighters, and to come through that, and me seeing both, NEISTO and MEHDI, succeed fight after fight, understanding, learning from his earlier win, and moving on to the next. It's been brilliant. और जितना आप सभी लोग चाहते हैं कि इन दोनों की आज फाइट होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि इन दोनों की फाइट होनी चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस रिंग में वो बॉडी ही हमारी सब कुछ है. अगर बॉडी सही हो तो आप फाइट कर सकते हो. पिछले 15 दिन में 2 या 3 फाइट कर चुके हैं ये, और ये नॉर्मली एक आम इंसान से पॉसिबल ही नहीं है. एक बार अगर कोई रिंग में उतरे और एक फाइट के बाद शायद महीने भर की रेस्ट की ज़रूरत होती है, रिकूपिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे बच्चे लगातार लड़ते रहें. इंजरियां हुई है, दोनों को इंजरीज हुई है, और डॉक्टर का डिसीजन ये है, डॉक्टर्स की डिसीजन ये है, दोनों को इंजरीज हुई है. और अली भाई और मैंने दोनों डॉक्टरों से कंसल्ट किया है, उनसे बात की है हमने, और यूनानिमस डिसीजन डॉक्टर्स की यही है कि ये फाइट हो नहीं सकती. ये फाइट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेडिकली दोनों फिट नहीं है, और अगर लड़ेंगे तो शायद इनकी करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा. और हमारी पूरी टीम ये नहीं चाहती कि हमारे कोई भी फाइटर एक ऐसे वक्त से गुजरे जहां उसे शायद अपने करियर को ही सैक्रिफाइस करना पड़े. इट्स नॉट राइट. ये कोशिश हमारी कुमिते वन वॉरियर हंट की यही है कि हम वॉरियर्स ढूंढें ताकि हमारे देश को आगे जाके वो रिप्रेजेंट करे. तो कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ बोथ द फाइटर्स, आई थिंक अली भाई आप अगर बताएंगे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो हमने लिया है, और सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसीजन क्या है. बेसिकली ये डिसीजन बहुत टफ था, और हमारे कुमिते वन का रूल है और उसका उसूल है कि अगर फाइटर को लाइफ लॉन्ग इंजरी होगी या कुछ भी ऐसी चांस जिससे उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं. मेरे लिए फाइटर सेफ्टी फर्स्ट है, ना कि उनका जीतना. और अन्ना के लिए भी यही है कि फाइटर सेफ्टी फर्स्ट, बाद में ही जो भी विनर और लूज़र तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, बट फाइटर सेफ्टी फर्स्ट है. So guys, we have decided to forfeit the fight. But बेल्ट है और डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा. So I think you will have to give us some time, कुछ टाइम चाहिए होगा हमें ये डिसीजन लेने कि बेल्ट एक है और फाइटर्स 2 है. तो I think we need a little time for us to come to a conclusion कि क्या होना चाहिए और आगे क्या होगा. So please bear with us. और दोनों की ही फर्स्ट फाइट और फाइट 2 दोनों के पॉइंट जब हमने टैली किए अकॉर्डिंगली, जैसे कि हम 10-9 का जो स्कोर देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो दोनों पॉइंट्स आए, तो दोनों के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे अगर हम ये निकालते हैं कि शायद कोई एक फाइटर को हम विन दे सकते थे,
रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस अभी तक लीग में जितना भी उन्होंने परफॉर्म किया, तो उसके बिहाफ पे भी देखा जाए तो दोनों का मैच टाई हो रहा है। सर अल्टीमेटली नंबर्स ये हैं कि मेहदी पॉइंट में 2 पॉइंट से लीड कर रहे थे, उनका टोटल स्कोर आया है 176 दोनों फाइट का। हाँ, दोनों फाइट का मिला करके, और अंगामी का आया है 174। बट क्योंकि मेहदी अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पाए और इंजर्ड हो गए, तो उनके 2 पॉइंट हम माइनस कर रहे हैं और दोनों का टोटल स्कोर हो रहा है 174, इक्वल स्कोर आ रहा है दोनों का, तो अल्टीमेटली टाई हो रहा है। And now it is time for the all-important decision. Anna, take it away. And the winner, ladies and gentlemen, for the first time in the history of MMA, and of course Kumite won, and a unique decision in the first year itself. But I think I proudly announce the winner of the Kumite 1 League as 1, 2, and 3. Ladies and gentlemen, what an absolute shocker! Rather, it's now time to hand over the belt to the two champions of the league. And here goes. कुमिते 1 वॉरियर हमने इसलिए किया था कि एक वॉरियर चाहिए था, एक मेल वॉरियर, एक फीमेल वॉरियर। बट एक फीमेल वॉरियर तो मिल गई, मगर मेल हमको 2 वॉरियर मिला। सो वी आर वेरी लकी, वेरी लकी।